think India today is much stronger, much more self-confident, much more respected. We have a decisive leader. Prime Minister Narendra Modi is amongst the tallest leaders in the world. Country which produces the highest number of STEM graduates every year. एक तरफ अमेरिका और भारत के बीच की ट्रेड डील लटकी है तो दूसरी तरफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ अनाउंस कर चुके हैं। अब भारत के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ तो अनाउंस कर दिया, लेकिन भारत के पास क्या कोई स्ट्रैटेजी है इस टैरिफ से बचने की? क्या ये टैरिफ इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बड़ा झटका होगा? इस तरह के कई कयास और कई आकलन एक्सपर्ट्स द्वारा लगाए जा रहे हैं, लेकिन जब ये बात केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के सामने रखी गई और उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि भारत का एक्सपोर्ट सेक्टर मजबूत है। भारत आने वाले समय में अपना एक्सपोर्ट और तेजी से बढ़ाता नजर आएगा और इंडियन इकोनॉमी के ऊपर फिलहाल कोई खतरा नहीं है और देश की जीडीपी के ऊपर भी कोई संकट नहीं मंडरा रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बीटी इंडिया एट 100 समिट में पहुंचे और यहां पर उन्होंने सभी सवालों के जवाब देते हुए कहा कि भारत ने हमेशा आपदा को अवसर में बदला है और आज दुनिया भारत के साथ काम करना चाहती है। ग्लोबल ग्रोथ में भारत का 16% योगदान है, जबकि शेयर मार्केट, करेंसी और विदेशी मुद्रा भंडार लगातार मजबूत हो रहे हैं। 1.4 अरब भारतीयों का टैलेंट देश की सबसे बड़ी ताकत है और आने वाला समय काफी उज्जवल है। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए भी पीयूष गोयल ने कहा कि आज भारत के पास एक ऐसा लीडर है जो निर्णय ले सकता है, जो डिसाइसिव है और पीएम मोदी देश का मनोबल बढ़ाते रहे हैं और उनके रहते हुए भारत हर परिस्थिति में डटा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ पीयूष गोयल ने किसानों और छोटे कारोबारियों की चिंता को भी एड्रेस किया और उन्होंने ये कहा है कि किसानों और उद्यमियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत सबसे आगे रहने वाला है। इंडिया यूएस ट्रेड डील पर गोयल ने यह साफ कर दिया कि डेयरी और एग्री सेक्टर में बाजार नहीं खोला जाएगा और किसानों के हित भी सुरक्षित रहेंगे। एक बार सुनिए जरा कि बीटी इंडिया एट 100 समिट में पीयूष गोयल जब पहुंचे तो उन्होंने टैरिफ्स, ट्रेड डील्स और इंडियन इकोनॉमी को लेकर के क्या कुछ कहा। I think in the last 1 year you must have maybe had conversations with 24 countries for global trade or more. So if I were to ask you by 2030, 2035 or 2047, what would be the shape of India's engagement with the global trading blocs and how many free trade agreements would we have? Just one quick point. You have made it clear to us how the previous round of free trade agreements was with economies that were still developing and how you are now pursuing a developed strategy. Can you give us that overview? Well, I think India today is much stronger, much more self-confident, much more respected. We have a decisive leader. Prime Minister Narendra Modi is amongst the tallest leaders in the world, most respected. We have today a country which produces the highest number of STEM graduates every year. We have a country which is already growing at 6.5% a year, which will only get better in the years to come. We will, of course, have trading arrangements with other nations with whom we have complementarity rather than doing trade agreements with countries done as was done by the UPA, which really didn't help Indian business as much as it should have. Whereas on the contrary, if you see our trade agreements, even business today and India today could not find fault with it, despite your best efforts. So UAE, Mauritius, Australia, the 4-nation EFTA bloc, Switzerland, Norway, Liechtenstein, and Iceland, UK. We are in dialogue with many other countries, Oman, EU, US, Chile, Peru, many others, New Zealand, many others want to start engaging with India. So today the world recognizes the strengths of India, recognizes our demographic advantages, recognizes what 1.4 billion aspirational Indians bring to the table as demand. An aggregate demand that India has is a huge market. Why else do you think everybody is vying up to do trade or have better market access in India?
how do you think we as a nation will deal with this challenge of deglobalization and how the trade order is being completely dismantled? And what do you think is the playbook going to be? How are you going to tackle this, including these penal tariffs on India imposed by the US? I don't see any deglobalization. I see countries restructuring their trade routes and their trade partners. And I'm quite confident this year India will do more exports than we did last year. And you already have mitigated, all factors put in place. BRICS becomes stronger? Well, I think these are questions you should ask the Honorable Foreign Minister. But I can only talk about trade and commerce. India's exports in the current year will be more than they were last year.